Hi everyone. Again, thank you so much for joining in. I hope you all are able to see my screen. In this webinar, we'll be covering four key aspects. Firstly is the mutual fund research module that we have. Secondly is mutual fund ratings. That also we had released about half a year back. So that also is there. Uh, then I'll talk about the portfolio analytics bit that we have. And lastly, the newly released calculator that we have created. Calculators will keep it at the last because it's still we currently have it in the web version. Mobile app will be releasing in the next release, hopefully this week or next week. And I'll show you some reports regarding to that. So let's start. So IFANOW research module. I'll also maybe try to mix Hindi with English so that it's compatible for all audiences. तो सबसे पहले हम देखते हैं IFANOW रिसर्च मॉड्यूल क्या है. रिसर्च मॉड्यूल बेसिकली एक एंड टू एंड म्यूचुअल फंड रिसर्च टूल है जिसमें आपको रोजमर्रा की चीजें बेसिकली आप जब क्लाइंट से बात करते हैं व्हेन यू अप्रोच देम और यू वांट टू सजेस्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर दैट यू नीड टू बी श्योर ऑफ कि कौन से म्यूचुअल फंड सही हैं because there are a lot of mutual funds currently. I guess more than 6,000 funds, different varieties, different categories, and most of the time we lack some एकदम updated data or information regarding certain funds, categories, the whole industry in general. So in that sense, we have created this mutual fund research tool. इसमें you can also download the scheme fact sheets, all comparison reports in a PDF as well as Excel for you to share with your clients or do some data processing at your end. So we'll start right off. This is the overview page. The mutual fund research section has 5 sections. एक हमारा overview जिसमें बाकी जो पूरे sections हैं उनके कुछ कुछ चीजें यहाँ पे है. Then we have categories. Categories में कैटेगरी एवरेजेस की कौन कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरीज ने कैसा परफॉर्म किया. आपको एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में देखना है या एलोकेशंस देखने हैं कि म्यूचुअल फंड कैटेगरीज अपना पैसा कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, तो इस सब का डेटा है. स्क्रीन फंड जो है हमारा म्यूचुअल फंड स्क्रीनर है जिसमें बहुत सारे स्कीम्स के इंडिविजुअली हमने अलग अलग टैब्स में उनके एट्रीब्यूट्स को लिखे हैं और उसमें वेरियस फिल्टर्स लगा के आप स्कीम्स को वो बेसिकली सर्च कर पा रहे हैं. आपको अगर कुछ डिजायर्ड है कि लास्ट इस कैटेगरी का होना चाहिए, इस एएमसी का होना चाहिए, एंड लेट्स से लास्ट 3 months रिटर्न शुड बी दिस मच, द स्कीम्स एज शुड बी दिस मच, उस बेस पे विल बी एबल टू फिगर आउट which schemes meet those criteria, and then you can click on any of the scheme and it will open up its fact sheet. I'll get into detail about this in some time. I'm just giving a brief overview of the sections that we have. Then we have compare funds. Compare funds is again very necessary because you would like to pitch one scheme over others. तो इस पे आप 4 schemes तक आप compare कर सकते हैं side by side on various ratings. जैसे आप देख सकते हैं overview performance के basis पे, रिस्क के बेसिस पे, पोर्टफोलियो के बेसिस पे, एलोकेशंस इन्वेस्टमेंट्स कितना चाहिए उसके बेसिस पे आप सब कंपेयर कर पाए. एंड लास्टली वी हैव सेट ऑफ टूल्स. टूल्स जो है अगेन इसमें 3 एस्पेक्ट के टूल्स हैं. कुछ है कैलकुलेटर्स जिसमें रिटर्न्स कैलकुलेटर आ गया, स्कीम की क्वार्टाइल रैंकिंग्स वगैरह आ गई, और कुछ है लुकअप जैसे स्कीम की एयूएम क्या है, पॉपुलर स्टॉक्स कौन से हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स ने ले रखे हैं, उसमें कभी कभी गिरावट आ जाता है, कभी कभी बहुत सारे स्टॉक्स को बहुत सारे फंड्स खरीदने लगते हैं, ये सब चीजें हैं. एंड लास्टली बेंचमार्क रिलेटेड टूल्स हैं जिसमें एक कस्टम बेंचमार्क भी है जिसमें आप अपने हिसाब से एक कस्टम बेंचमार्क बना सकते हैं बाय कंबाइनिंग इक्विटी एंड डेट. अगर किसी का पोर्टफोलियो 60-30 है, 60-40 सॉरी, तो 60% इक्विटी 40% डेट है, तो उसके अगेंस्ट पर आप किस बेंचमार्क से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप वो बेंचमार्क भी बना सकते हैं और फिर अलग अलग जगह पे वो बेंचमार्क यूज हो. तो वेरी बेसिकली लेट्स मे बी स्टार्ट विथ अ फैक्ट शीट. सो दिस इज डायरेक्ट प्लान. सो ये फैक्ट शीट जो है दिस इज बेस्ड ऑन अपडेटेड डेटा. इसमें जो नैव और परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा है दैट कम्स इन रेगुलरली, इट गेट्स चेक्ड रेगुलरली. और जो पोर्टफोलियो लेवल डेटा है कि एक स्कीम की होल्डिंग्स क्या है दैट कम्स एट 1 month डिले, क्योंकि एएमसीज जो है वो 1 महीने के डिफरेंस पे वो निकालते रहते हैं.
तो यहाँ पे ये है, दिस इज, इसमें आपके हीरो मेट्रिक्स हैं, एग्जिट लोड चेक करना है, नैव, सब कुछ आपको देखना है, ओवरव्यू देखना है, कहाँ से क्या है, डिटेल्स, एएमसी के डिटेल्स। परफॉर्मेंस पे आप जाके देखना चाहते हैं स्कीम के, तो ट्रेलिंग परफॉर्मेंस है, इसमें आप डेट रेंज लगा सकते हैं। फिर रोलिंग रिटर्न्स आप देख सकते हैं, स्कीम के रोलिंग रिटर्न, डिस्क्रीट एसआईपी रिटर्न्स। प्लस हमने यहाँ पे कैलकुलेटर्स भी दिए हैं कि अगर आप इसी स्कीम में बैकवर्डली, बेसिकली आप एक साल पहले इफ यू हैड इन्वेस्टेड इन अ मंथली एसआईपी or a lump sum, then how the returns would have been for this particular scheme. Similarly, NAV-related highlights, returns, trailing returns, total returns. On top of that, portfolio हमारा और एक section है. This basically tells you कि ये scheme ने किस sector में या कितने companies, कौन कौन से companies में पैसे लगाए हैं, जिसमें these are sectoral allocations. You can see this scheme has 96% equity, number of companies 53, top 10 allocation कितना है. This shows you how concentrated the scheme is. जैसे इसके टॉप 10 स्टॉक्स में ही इक्विटीज में 96% के आसपास है. पोर्टफोलियो पी पीबी. दिस ऑल्सो शोज कि कंपेयर टू लास्ट मंथ, इस महीने का जो डेटा है उसमें कौन कौन से स्कीम्स में द फंड हैज इंक्रीज्ड इट्स पोजीशन, एंड कौन कौन से स्कीम्स में इट हैज रिड्यूस्ड इट्स पोजीशन, और कौन कौन से कंपनीज को ऐड किया है, कौन कौन से चीजों को रिमूव किया है फ्रॉम दिस स्कीम होल्डिंग. एंड आपको इंडिविजुअली भी दिख जाएंगे. अगेन इसमें कौन से स्कीम्स, कौन से कंपनीज में दे हैव रेज्ड देयर होल्डिंग्स, कौन कौन से में गिरा हुआ है. दिस शोज अप, एंड यू कैन through pagination you can check out all the details. And the best thing is you can also download it. So once downloaded, it comes in a very neat one pager with all your branding, uh, all of these information, all the relevant information, very neatly organized. Maybe I'll just show it right away. तो ये है, तो ये अपना म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट है, जिसमें टॉप होल्डिंग्स है, ट्रेलिंग रिटर्न्स वगैरह सब है, वन पेजर विथ योर ब्रांडिंग, कंपनी के लोगो भी हैं, रेटिंग. तो इस तरह से है. सो दिस बेसिकली फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च मॉड्यूल. वी हैव गैदर्ड एवरी डेटा रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड प्रेजेंटेड इन द फैक्ट शीट, एंड वी आल्सो यूज दिस ड्यूरिंग द एंटायर मॉड्यूल. तो ड्यूरिंग द एंटायर मॉड्यूल में अगर आप देखें तो ओवरव्यू पेज है. इसमें फर्स्टली यू गेट टू सी द मार्केट. Basically, you can add indices. By default, Nifty 50 and Sensex दिखाते हैं, just to get a sense of the market. Investment ideas, we have also curated some funds based on some features. जैसे ये wealth building के लिए है, तो it has to have some category. It has to have at least this much return in the last 5 years. उस हिसाब से हमने ये बना रखे हैं. So for you to suggest these schemes whenever any client requirement comes in. Ratings upgrade downgrades, again it's based on our upgrades. कि हमारे रेटिंग, क्योंकि एवरी क्वार्टर वी कीप अपडेटिंग आवर रेटिंग, इट्स अ कंप्लीटली क्वांट बेस्ड रेटिंग सिस्टम. तो उसके हिसाब से जो स्कीम्स का रेटिंग अच्छा हुआ है, इसका थोड़ा खराब हुआ है. प्लस वी आल्सो हैव एनएफओ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. इफ यू वांट टू चेक व्हाट आर द एनएफओस, हियर यू कैन फाइंड द टॉप, आई मीन द क्लोजेस्ट टू देयर क्लोजिंग, and you can also check for equity, debt, hybrid, others on the list, and whatever data is available you can also check for these NFOs. And lastly, we're also showing some category-wise highlights. Also, we have the widgets for the entire tools that we have. I'll explain this in detail. Category section, it's very simple. If you want to see which category did the best in last 1 year, so you can just, do some these sorting, and it will come up. Also, you can see for equity, debt, hybrid, you can just see which categories are doing good, which are not doing that well. And in the allocations tab, this is a very interesting tab. Isme you'll be able to see how mutual funds are actually allocating money in sectors. So if you see all the equity funds, here also you can get into specific equity categories. Isme you can check which, जैसे automobiles है, they have been consistently increasing position in automobiles. So the color scheme is that if a particular month's value is less than the previous month, then it goes in red. And if it increases, then it goes in green. So you see certain sectors may it has given, let's say gas transmission. It's a very media entertainment. So it had been decreasing, but now that has also increased since its last month. And again, you can check for specific categories as well, subcategories. In the screener, it's again very useful in day-to-day activities. So
So again, performance may you can see all the performance related columns. Is maybe you can do sorting to come up with schemes which have done best. Similarly, for portfolio related, if you want to check risk measures, NAV details, and also I think the filters are the most useful in this case. So in filters, you have basic filters, performance related filters, returns basically, risk related filters, and also rating if you want to see which have currently 5-star rated or not, 1-star rated, which have increased their rating, which have decreased. All this can be found. And again, the whole list, whatever comes in, can be downloaded as an Excel. And whichever scheme you want to explore further, you can just click and the fact sheet opens up, as I showed you before. So I was talking about compare funds. Isme basically you can just put in schemes, the names, and the results will come in. Let's say I want to compare this against Aditya Birla, let's say some equity advantage. So here every detail is put side by side. And based on that, you can download it and send it to your clients as well. And lastly, let's come to tools. I'll go over very briefly. You can find, popular stocks, which stocks have been the most popular in terms of, mutual funds buying it. So let's say HDFC Bank, 608 mutual funds have bought it. If you want to check which funds, you can just click. And, it's another tool that we have, stock search. You can see all the funds that have invested along with the weightages and number of shares that they had bought. Similarly, you can do it for debt instrument. If you want to search any debt instrument or a stock, you can just search the name and whatever mutual funds have held it will come up. Similarly, so that's basically overall the mutual fund portfolio, mutual fund, research that we have. It will help you basically send and share mutual fund fact sheets, mutual fund comparison reports to your clients. Also, it will help you do analysis by yourself for you to build a strong portfolio of mutual funds with every detail being updated as and when it is released publicly, and it can all be downloaded in very good reports. So then maybe let's move on to maybe talk very briefly about the ratings that we have. Because we are showing ratings, it is a completely quant-based rating system. It is not based on any subjective analysis that we do. So whichever schemes we rate, they at least have these two criteria that they meet. Firstly, their last 6 months AUM, average 6 months AUM is more than 500 crores, and at least 1 year age. Then we only rate these schemes. And how these schemes are rated, basically, we do ratings category wise, because every mutual fund category has its own eccentricity. They have their own quality, certain risk performance pattern. So in which every mutual fund is evaluated with the category, with the top and bottom performing schemes of the category and the benchmarks also. And based on that, we do a completely a relative grading sort of a mechanism, like a marking system. And based on that, from their short-term performance, long-term performance, the consistency in performance, how the risk ratios, are managed, and is the scheme asset, basically the scheme size or the asset pool that is very large, how it has performed when the asset pool was low. All those sort of things we analyze, and in a completely quantitative way, the ratings are generated. So it is very unbiased, and it has a lot of overlap with other rating, giving websites or institutions, organizations. So then, it can help you, maybe highlight certain scheme where, it is highly rated. And you can also see, like last rating, it was less, but now it has improved. Or you can also check, maybe not going to the entire data, but you can check if certain rating has decreased for a certain scheme, then there might be some problems, and then maybe you can explore further through the fact sheet. So let's maybe very quickly, let's very quickly get through the calculators. We've recently released, I think last week we released, and we have plans to add a lot more calculators. So currently we have divided it in 3 sections. Investment calculators, loan calculators, and goal calculators. We also provided this in the client section as well, client side, wherein, if you want to sit with the client and discuss certain things, you don't want to show every time, the advisor side, advisor section.
So in their own client portal, these calculators can be seen, and it can also be easily managed through roles. If you want to hide them for your clients, you can easily hide them through roles. Very simple and easy to use. We've kept it very simple, wherein everything is just a slider. If you put any slider, the amount invested, returns, yearly, how it will change, in terms of SIP, monthly SIP, if you change, how it will change rate of return. Uh, this call can be seen. And we are also coming, maybe in the next couple of weeks, we'll have reports also for these calculators, one-pager reports. I can show you a mock-up also. So this sort of reports will come in, wherein all the assumptions, the results, the returns, and graphs will be seen with your branding. So if you are doing it for a particular client, in the client section, the client's details will also come in, as well as your ratings, your disclaimers, and everything. So yeah, so we have SIP, lump sum, step up SIP, become a crorepati is sort of a goal calculator, wherein we can, if the client wishes to have this much amount of money, then if he is doing SIP, what it should be the monthly SIP. If she is doing lump sum, what with the lump sum value, and how the investments would grow, all these sort of tools. Simple interest, compound interest again comes in very handy, wherein there is certain things which are in simple interest, and clients are confused about it. Compound interest also, just to show the power of compounding. When if you have a particular amount and you compound it yearly, monthly, quarterly, then how quickly it is, it grows. As they say, compounding is the eighth wonder of the world. So this, calculator comes handy in that. So then we come to loan. Loan may we have, sort of every sort of loan, very similar in architecture, but we have kept it different because when you download a particular report for a particular loan, you want to mention कि it is for the car loan, it is for the home. So इसमें again loan amount आप डालिए, rate of return के हिसाब से monthly EMI, total interest कितना भरेंगे, कितना payable है, and this is वो basically amortization का एक representation है, जिसमें ईएमआई का जो कंपोजिशन है कि प्रिंसिपल पेड और इंटरेस्ट कितना दिया और बैलेंस कैसे कैसे घट रहा है, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. एंड वी आल्सो हैव डेटा फॉर दिस एज वेल कि पूरा एमोर्टाइजेशन टिल लास्ट कहाँ तक प्रिंसिपल पेड इंटरेस्ट चार्ज कैसे चेंज हो रहा है. एंड लास्टली वी हैव गोल. Goal is again very similar. This is also actually the calculators are also provided in the mobile app as well. I'll show you in a bit. तो इसमें भी रिटायरमेंट गोल, हाउस गोल, वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर कि कैसे एसआईपी करेंगे तो क्या होगा. इसमें इन्फ्लेशन भी आ जाता है. सो लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू टू प्ले अराउंड. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द कैलकुलेटर्स यू रिलीज. वी आर आल्सो रिलीजिंग एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, then EPS calculators, and some other calculators also related to these. So it will be a very holistic bunch, and it will be, since it is available on the client side, and you can download your branded reports. I mean, this really helps you in customer acquisition, convincing, or maybe just engaging clients, initiating investments and everything. So then let's jump on to portfolio analytics. Lastly, this session might be a bit, rushed because again, we are fighting against time, but, I'll try to give you a certain idea of what we are trying to do and how these things can come handy. And then, of course, we have user manuals. You can always reach out to your RM, or maybe you can have another sessions also wherein we discuss all these things at length. So this is a portfolio, a particular portfolio. So it is currently can be found in analytics tab. So couple of lines about portfolio analytics, what we tried to do. Mutual fund portfolios, analyzing mutual fund portfolios is a bit different than other stocks, because in mutual funds or sort of any sort of investment portfolios, we always have one number, that is the XIRR. So XIRR, although is a good metric to measure कि portfolio ने कितना grow किया या how much returns have been made, but it sort of is a very vague thing because it's just a number in which आपने historically how the portfolio has been managed, कैसे कैसे returns दिए compared to other, क्योंकि एक पोर्टफोलियो में बहुत सारे कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता रहता है. सही टाइम पे इनफ्लो आउटफ्लो हुआ था कि नहीं हुआ था, जिससे पोर्टफोलियो का एक डाउनटर्न कम आया, वो सब जो है नुआंसेस छूट जाते हैं. सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू, जिसमें एक पोर्टफोलियो हाउ basically we have explored the entire portfolio, the complete X-ray. Firstly, how it will help you. Firstly, let's say, and
let's say if you have a client or a prospect, there is not yet a client, and they already have an investment legacy, they're already doing investments. So what we can do is basically just get their cash, upload the cash, and see the analytics. And you can very pinpointedly say कि ये यहाँ पे ये could have been better, ये देखिए past में आपका ये हुआ है, I would have done something else, वगैरह वगैरह. So a lot of talking points it can come out of it. And also currently, since it has become easy for people to shift brokers, and those sort of things have also come in, actually showing your value in terms of how the portfolio has grown, has been managed, and how the risks are in control, the portfolio is not as concentrated. All these sort of things is very helpful in current climate. And it really opens up a very what do I say? It's an elevated service. It's a very unique offering, because even if they go DIY, people can't really find this sort of analysis, and that was gives you an edge. So I'll jump right in. So portfolio analytics में currently it's in mutual fund portfolio. इसमें we have done is we have compartmentalized into 3 sections: performance, asset allocation, risk, and scheme details. Because आप कोई भी portfolio देखते हैं, firstly I want to check कि how the portfolio has performed. Secondly, I want to check, okay, whatever holdings I am having, am I being well diversified? Is my portfolio too concentrated? The securities that I am putting in, whether my money is going into right sectors or not. So those sort of things. Risk may, you can see historically how the risk has been managed, currently how the portfolio is geared towards risk. And lastly, scheme details may, we basically whatever we discussed in the research section, we can see the entire things for the current portfolio as well. And then clicking on a particular scheme, it takes you to that particular scheme. This is, I guess, the real power of this module, because mutual fund underlines the stocks that mutual funds invest in. And when we have multiple mutual funds held from a very different timelines, it gets a bit difficult. But with this tool, we have razor sharp focus on what I am owning, what much, and how much of my portfolio is actually going into that particular stock. So let's jump in. So let's first go through performance. And now you can see 2 graphs. This is basically, we have come up with a very novel idea regarding mutual fund performance. Jisme, because a particular portfolio has a lot of cash inflow, outflow, so it gets really difficult ki how much has the portfolio earned just by being in the market, because of the market, or because of the underlying investments that we have done. So we have come up with an algorithm jisme we are basically plotting TWRR, or very simple terms, we are basically treating mutual fund portfolio itself as a mutual fund, and then we are plotting its NAV. So in a way, mutual funds का क्या होता है? Mutual funds में का एक asset pool होता है, जो अगर ज्यादा investors आते हैं तो वो asset pool बढ़ जाता है, investors चले जाते हैं तो asset pool जो है वो उसका shape बदलता रहता है, वो कभी बढ़ता है कभी घटता है. बट म्यूचुअल फंड का जो NAV होता है, दैट इज ओनली डिपेंड ऑन कि म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से होल्डिंग्स ले रखे हैं, तो इसलिए NAV पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता. सिमिलरली हमने क्या किया है, हमने सेम लॉजिक लगाया है, जिसमें no matter how many transactions have been done on this particular portfolio at different times of different value, it doesn't affect the overall portfolio growth. And we have also shown it against a relevant benchmark, equity 50, debt 50. Why did we do that? Because if we see for this particular portfolio, we'll see that it's near about equity debt ka equal proportion. So the relevant benchmark is again the equity 50, debt 50, that has been by default chosen for this particular portfolio. इसमें again you can do कि भाई कोविड के बाद में कितना पोर्टफोलियो ने कमाया. कोविड के बाद एक्चुअली इतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं है, जितना भी आउट परफॉर्मेंस है वो उससे पहले का है. बट हम एक चीज देख सकते हैं कि ड्यूरिंग कोविड इट हैज फॉलन लेस देन द बेंचमार्क, मतलब इक्विटी 50, डेट 50 बेंचमार्क भी ज्यादा गिरा था देन पोर्टफोलियो. सो दिस बेसिकली शोज कि हमारा पोर्टफोलियो हैज बीन वेल कुशन्ड और वेल मेंटेन्ड ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न्स. अगेन पॉइंट टू पॉइंट हम दिखा सकते हैं व्हाट हैज बीन द परफॉर्मेंस पॉइंट टू पॉइंट, ईयरली, क्वार्टरली, कौन से साल में ज्यादा रिटर्न्स दिए, कौन से में नहीं दिए. रोलिंग एनालिसिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइम्स ट्रेलिंग परफॉर्मेंस उतना क्लियर पिक्चर नहीं दे पाती जितना रोलिंग पिक्चर देती है. एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली इफ यू वांट टू चेक कि हाउ द डेली रिटर्न्स हैव बीन, कि ज्यादातर कौन से रिटर्न्स मिलते हैं, मेरा
कितना वेरिड रिटर्न्स मिलते हैं। अगर इफ आई गो फॉर अ क्वार्टरली रिटर्न, तो मेरा क्वार्टरली रिटर्न कितना फैला हुआ आता है अगेंस्ट द बेंचमार्क। सो लेट्स से द बेंचमार्क का रिटर्न इधर पे है और मेरा पोर्टफोलियो का दूर है, तो बेसिकली शोज कि मेरा पोर्टफोलियो माइट नॉट बी इन सिंक विद द रेलेवेंट बेंचमार्क, सो यू माइट वांट टू चेंज द बेंचमार्क। और या फिर अपने पोर्टफोलियो का रिस्क आप फिर उस हिसाब से एसेस करते हैं। एसेट एलोकेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से। इसमें से ये ओवरलैप का जो टूल है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, हमारा जो आइडिया रहता है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल इज टू बी वेल डाइवर्सिफाइड। तो हम उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स बाय देमसेल्फ आर वेल डाइवर्सिफाइड। बट व्हेन वी बाय अ बंच ऑफ म्यूचुअल फंड्स, उसमें वी डोंट नो कि हर एक का अंडरलाइन क्या है। बट उसी हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड सेम सिमिलर स्टॉक्स को ही बाई करते हैं, तो एंड में जाके हमारे पोर्टफोलियो में भी वो स्टॉक्स जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं। ऑल्सो हम दो दो म्यूचुअल फंड्स भर रहे हैं, जैसे इन दिस केस इफ यू सी आदित्य बिरला ईएलएसएस टैक्स सेवर एंड कोटक फ्लेक्सीकैप फंड में 44% का स्टॉक ओवरलैप है। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस आई कैन सी जो भी स्टॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो देन आई कैन डू सम गुड डिसीजन मेकिंग कि वेदर आई वांट टू होल्ड दीज टू स्टॉक, मतलब टू म्यूचुअल फंड्स, आई एम आई पेइंग एनफ, आई एम पेइंग टू मच। मैं शायद एक ही रखता तो मेरा काम होता। ऑल्सो इफ यू वांट टू चेक कि एक्सायरर रिटर्न्स के हिसाब से, करंट वैल्यू के हिसाब से, कि जैसे इसमें करंट वैल्यू उतना ही दे रहा हूँ जो मैं इसमें दे रहा हूँ, ऑल्दो इट्स अ फ्लेक्सी कैप फंड, तो एक्टिवली मैनेज फंड्स है, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। यू कैन चेक इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज ओवरलैप। कंसंट्रेशन आई शो यू। कंसंट्रेशन अगेन जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में वी डोंट नो कि म्यूचुअल फंड्स ने डिटेल में कौन से स्टॉक्स ले रखे हैं, और हम एक्टिवली अवॉइड करना चाहते हैं कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे इफ यू सी कि टॉप 3 स्टॉक्स 11%, टॉप 5 स्टॉक्स 16%, ये टॉप 5 स्टॉक्स, तो इट इज सॉर्ट ऑफ वेल डाइवर्सिफाइड। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक एक और एक इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें वी कैन गेट राइट डाउन टू द लास्ट रुपी कि एक्चुअल पूरे पोर्टफोलियो का कितना पैसा कहाँ गया। तो जैसे इक्विटी में 50 लाख गए, उसमें किसी इक्विटी में से आप डोमेस्टिक इक्विटीज में गए, डोमेस्टिक इक्विटी में किसी सेक्टर वाइज कहाँ कहाँ पैसे हैं, दिस कैन ऑल्सो कम इन हैंडी। क्योंकि अगर कहीं कहीं पे कोई सेक्टर रोटेट होते हैं, या सेक्टर एक बैंकिंग सेक्टर लेट्स से डाउनवर्ड चला गया, या आईटी सेक्टर डाउनवर्ड चला गया, आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि देखिए आपका सिर्फ 5%, 4.5% ही आईटी में इन्वेस्टेड है, सो डोंट वरी, उतना कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। उसके अंदर फिर आप इंडस्ट्री देख सकते हैं कि बैंक में मोस्टली प्राइवेट बैंक्स हैं, उसके अंदर फिर कंपनीज हैं, कि एक्चुअल कौन से स्टॉक में कौन से, मतलब कितना पैसा मेरा गया और ओवरऑल पोर्टफोलियो के कितने पैसे उसमें गए। तो दिस सॉर्ट ऑफ डू। रिस्क मेजर्स में आते हैं। रिस्क मेजर्स अगेन वेरी यूजफुल टूल वंस वी गेट अ हैंग ऑफ इट। इसमें बेसिकली शो होता है कि मेरे पोर्टफोलियो में, मेरा पोर्टफोलियो किस तरह से बना है। इसमें हर एक पोर्टफोलियो में वी वांट सम हाई फ्लाइंग रिस्की स्टफ, रिस्की स्टॉक्स या रिस्की म्यूचुअल फंड्स, जो हमको एक ओवरऑल अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। ऑल्सो वी वांट सम एंकर्स जो हमारे पोर्टफोलियो को डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, एनुअलाइज रिटर्न फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एनुअलाइज वॉलिटिलिटी, और बीच में हमारा पोर्टफोलियो। और उसके रेस्पेक्ट में, हमारे पोर्टफोलियो के रेस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से स्कीम्स कहाँ पे हैं। जैसे दिस आर ऑल इक्विटी, जैसे क्वांट मिड कैप, इसमें रिटर्न्स तो बेसिकली रिस्क ज्यादा ले रहा है पर रिटर्न्स भी ज्यादा दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, जो रिस्क कम ले रहे हैं, रिटर्न्स भी कम दे रहे हैं। और बीच में है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड क्योंकि हाइब्रिड ऑब्वियसली बीच में ही आना चाहिए। तो वही, अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम इस क्वाड्रेंट में है, बढ़िया है, इस क्वाड्रेंट में है तो भी चलेगा, पर अगर इस क्वाड्रेंट में है, मतलब कम रिस्क एंड हाई रिटर्न्स, देन वी से स्कीम्स आर रियली डूइंग गुड। और यहाँ पे वेरी नीट हम थोड़े फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, जैसे एक्सआईआरआर और करंट वैल्यू, कि कौन से स्कीम्स ऐसे हैं जो बेसिकली एक्सआईआरआर के हिसाब से हाईएस्ट एक्सआईआरआर है पर करंट वैल्यू में कम है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्कीम्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वेरी डेमोन्स्ट्रेबली, और उनमें मैं पैसे लगा रहा हूँ कि नहीं। तो दिस विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। ड्रॉडाउन्स हमारा एक आता है, तो ड्रॉडाउन इज बेसिकली कि पोर्टफोलियो का कितना, ड्रॉडाउन बेसिकली इज अ पीरियड जहां पे पोर्टफोलियो हाई पीक को वापस टच नहीं कर पाता है फॉर सम टाइम। देख सकते हैं इस पोर्टफोलियो का हाईएस्ट ड्रॉडाउन पहले था, अभी ड्रॉडाउन्स में कम है। एंड इफ यू जूम इन यू कैन चेक कि बेंचमार्क से बहुत कम ड्रॉडाउन्स आया है, और ये पोर्टफोलियो पास्ट में कितने कितने दिन में रिकवर किया है। की पीरियड्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप दिखा सकते हैं कि भाई जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जनरल इलेक्शंस हुए थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब पोर्टफोलियो वर्सेस दिस बेंचमार्क क्या क्या रिटर्न्स थे।
और रोलिंग रिस्क में आप वेरी क्विकली आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली हाउ द रिस्क हैज बीन मैनेज। जैसे 1 ईयर का रोलिंग है तो हिस्टोरिकली इस पोर्टफोलियो का हाईएस्ट जो वॉलिटिलिटी था, जो एक मेजर है रिस्क का, वो 23% पे गया था। उसके बाद से ये बेंचमार्क से कम ही वॉलिटिलिटी दिया है। तो ये आप डेमोस्ट्रेबली दिखा सकते हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रोलिंग में। और स्कीम डिटेल्स में एज आई सेड, एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्कीम, क्योंकि हमने पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे जब परफॉर्मेंस, एसेट एलोकेशन और रिस्क देख लिए, देन यू कैन आइदर चूज कि मुझे ये स्कीम रखने चाहिए, ये स्कीम नहीं रखने चाहिए, इसमें ज्यादा बढ़ाना चाहिए, इसमें कम करना चाहिए। तो देन लास्टली द रेटिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स कैन हेल्प यू डिसाइड एंड योर क्लाइंट डिसाइड। तो दिस इज अगेन अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, जिसमें आप क्लाइंट्स को, कोई भी प्रोस्पेक्ट है तो उनको मतलब बेसिकली उनके पूरे पोर्टफोलियो का ज्ञान दे सकते हैं। और उसमें यू कैन हेल्प देम बेसिकली improve a particular portfolio, or if they want to showcase anything, they might not be knowing कि उनके पोर्टफोलियो में क्या गड़बड़ है। So then you can very quickly point out कि आपके पोर्टफोलियो में ये सही कर सकते हैं या ये सही है। जो मैंने जैसे बताया, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक है, जैसे पेटीएम का इंसिडेंट हुआ था, उसमें आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि पेटीएम जो है इस पोर्टफोलियो में बहुत नेग्लिजिबल है, तो उससे इफेक्ट नहीं आएगा। दो सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशंस। आई थिंक वी आर mostly done. I think let's open up for questions. ये अगर सेशन थोड़ा रश लग रहा है, सो प्लीज बेयर विथ मी। डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिटिक्स के यूजर मैनुअल्स मौजूद हैं। यू कैन आस्क योर आरएम टू प्रोवाइड यू दिस। इसमें एवरी डिटेल वी हैव मेंशन्ड, राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टिल हाउ इट कैन बी यूज्ड, और कहाँ कहाँ पे आपके काम आ सकता है, और वेरी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स, वेरी इजीली एक्सप्लेन। म्यूचुअल फंड रेटिंग्स का भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें द मेथोडोलॉजी, नॉट द एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी, बट हाउ वी वेंट अबाउट इट, हमने इसको कैसे कंसेप्चुअलाइज किया और कैसे हमने एक मार्किंग सिस्टम दिया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया, इस सब के बारे में पूरी जानकारी है। ऑल्सो पोर्टफोलियो एनालिटिक्स पे एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है हमारे वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो यू कैन आस्क योर आरएम फॉर दैट। ऑल्सो यू कैन चेक आउट IFANOW यूट्यूब चैनल। वहाँ पे पोर्टफोलियो एनालिटिक्स के आपको डिटेल्स दिख जाएंगे। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव 1 hour वेबिनार। सो ठीक है, लेट्स ओपन अप फॉर क्वेश्चंस। So, sir, am I audible? यस Hello. यस, हेलो। Perfect. So I Yeah. just have two small queries. Uh, can we get the recording of this particular webinar which has just took place? Actually, I was on and off, so I am into श्योर it, श्योर, but still, I might dig out something else as well. yes, we'll try to provide it in our website, and also we'll share it with the relationship managers. So within a couple of Perfect. days, those relationship managers at least would have the video with them, and we'll try to host it in our YouTube channel as well. Perfect. Secondly, can you share the necessary documentation of this particular portal via PDF in this particular chat box only so that everyone can have an access? Hello. For the just a second, for the entire portal or just portfolio management, because that's Mhm. that we Only can the share. portfolio management thing. Yeah, Only the portfolio management thing. sure, sure. If you can share the PDF in the chat box, so it would be much more easy to have a real-time access. Sure, sure. So let me just share the URL only. It's Perfect. Thank you so easily much. accessible. So that will help. Just a second. Okay. Mr. Ashutosh, you had raised a hand. You can just unmute yourself and Hello. Yeah, yeah. hello. So hi, Hi. Vivo. Yeah, good insight you have given. So I just have a query. Suppose that Mhm. one client has like a 10 or 20 mutual funds. Okay. So during that Okay. one insights you have given like these type of the overlaps between the all the stock. Can Mhm. I get Mhm. all the stocks list in an Excel form?
in an Excel form, I think it would be difficult Format, because format. in So Excel, see what happened. So sometimes what happened, a client came and say, like he is giving me the cash statement and just he want to analytics of entire portfolio. So what I hmm, generally do, so generally what I do, I go the funds like selection of the each mutual funds, find on the money control and do the what is the portfolio holdings they are holding. Okay. So after understood. that, I need to like collect the data like and match the data like how many overlaps we need to do, how many like over spending, like some persons has a PMSs also. Okay, Understood. so in Understood. that So, scenario, I need to hmm, connect and analyze and need to analyze how much the stocks in the asset class in understood. the PMS or the MF is the overlapping. So suppose that someone has higher in the mutual funds, okay, holdings. But what happens? So in the PMS, they are getting the higher returns, and but the asset class Hmm, are the same, but the different class because in the mutual funds there are lots of diversification. Okay, so that's the things I understood. wanted to know, so I can show them. So this is the Excel, like a Excel. Yeah, yeah. So this is Got the it. points. Completely get your question. Yes. Excel reports actually we cannot give. There is, data redistribution clause that we have signed with our data vendor. So certain things can be only seen in the UI. And you can also download a detailed PDF report for this, but it won't have all the stock data. And Excel में we cannot give because the data vendor के साथ अपना जो relation है that allows us only certain things to show in UI and certain things that we can give as downloadable Excel data. So that unfortunately is Okay. currently not there. Okay, so Sure. is it going to possible in the future, coming futures? Currently I don't Okay, no issue. see So, that. one to two, three, I have the questions. Like recently, one of my client I visited and asked all the details and all the things. Okay. So what happened? He asked me, what is the security of the data? Like he asked me, like, suppose ठीक है. that I'm giving you the cash. Mr. Ashutosh, maybe let's connect after this offline because other people, have Okay, been raising works, hand and works, no issue. let's So you let's can share connect your contact after. details. Okay, Yeah, yeah, please. I'll please. ask your RM to connect me with you, and then we can take this off. Okay, works, Vivo. Thanks for your answer. ठीक है. Okay, thanks. Uh, if anybody have any other questions, please raise your hand. We still have some time. Any questions at all? If you also want me to, share with you another webinar on this, that also I'm very happy to do. So उसके लिए भी you can raise your hand. हाँ, Mr. Nikhil, you can just unmute yourself Uh, and Perfect. Sir, it would be very great if we go much more into deep research because I believe the platform which you're providing is very much Mhm. interesting if you communicate well with the platform and the data inputs which you actually insourcing. It would be very fruitful in future if we have regular or such interactions which deep digging of stocks as well, so Hmm. that it would be much more easier for us to understand what our portfolio is holding and how the market is responding with the portfolio. Right, right. So we can have a sort of a regular thing. We have a lot of things planned also on this front. Currently, I'm not revealing, but we are taking this, a long way in terms of how we are integrating it with other data sources. We are bringing more analysis to it. We are, going in the direction of, model portfolios and everything. But currently, sure, we can have, connect. Maybe offline also we can connect. Also, I'll try to schedule, regular meetings on the portfolio analytics and other analytics analysis that we have in the platform. Thanks. Mr. Suraj, you can just हाय unmute सर, yourself. Hello. मुझे Hi. दो तीन क्वेश्चंस हैं। एक तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग है। जो अपना Mhm. डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उस केस में हम कितने लाइबल होंगे इस केस में अगर डेटा मिसयूज होता है। डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो चार्जेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पहला चीज, Hmm. अपने को उस पर क्या करना है। और दूसरी चीज, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो एक छोटी सी दिक्कत आ रही है कि जब हम विड्रॉ करते हैं तो उसमें जो कैपिटल गेन आता है हमारा, वो हमें शो Okay. शो नहीं हो रहा। अच्छा. क्योंकि जब हम विड्रॉ करेंगे तो हमारा कैपिटल गेन लगेगा। मान लो कि 10% था तो 12% हो गया, और फ्यूचर में अगर 20% हुआ तो मेरे को इम्पैक्ट कितना आएगा Hmm. मेरे गोल के ऊपर। जैसे मान के चलिए अभी 5 करोड़ चाहिए, तो अगर 20% बढ़ गया तो मुझे यहाँ पर
अराउंड 7 करोड़ के आसपास मुझे करना पड़ेगा। तो वो इम्पैक्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, जो भी डेटा आता है आपका, जो एनालिटिकल टूल है वो सबसे वाव टूल है। ठीक है, इसलिए बहुत सारी चीजों के लिए हमें समझ आता है। बट यहाँ पर भी कोई चीजें बेंचमार्क चूज करने में हमें बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि मान के चलो कि क्लाइंट का डेट है, ठीक है, 20% डेट है, बट वो 50% के साथ मैच करता है कई बार, या किसी के पास रिटायरमेंट फंड है तो वहां पर वो इशू करता है बेंचमार्क के साथ। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए यहाँ पर? तो हाँ, तो मैं एक बार बेंचमार्क का मैं बता देता हूँ आपको। बेंचमार्क बेसिकली आप सेट कर सकते हैं दो तरीके से। आप जब सेटिंग्स में जाएंगे प्रेफरेंसेस में, तो आपको पोर्टफोलियो का एक टैब दिखेगा। इसमें एक है कि आप क्लाइंट्स को बेंचमार्क्स नहीं शो करेंगे, ये ऑप्शन है सारे क्लाइंट के, या कुछ अगर शो करेंगे तो ये हमने कुछ कैटेगरीज दी हुई है। इसमें हमने एक सिस्टम ऐसा किया है कि जैसे आप कुछ क्लाइंट्स होंगे जिनके लिए आप अलग बेंचमार्क रखना चाहते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड क्लाइंट्स होंगे जिनको आप सिर्फ जो उनका रेलेवेंट बेंचमार्क दिखना चाहिए वो दिखाना चाहते हैं। तो ये हमने इक्विटी रेंजेस के ऊपर किया है कि अगर किसी का पोर्टफोलियो में 40% से ज्यादा इक्विटी है तो उसको ये बेंचमार्क दिखाइए। और ये बेंचमार्क जो है ये आप क्रिएट कर सकते हैं कहाँ से, रिसर्च में जो टूल है, इसमें आप कस्टम बेंचमार्क बना सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल स्कीम्स मल्टीपल प्रोपोर्शन में डाल के आप बेंचमार्क बना सकते हैं, और वो यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं जनरली लोगों को। तो देखिए बट प्रॉब्लम इसके क्या अलावा आती है आप अगर, सर, एक यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम क्या मैं आती है कि खत्म कर दूं सर। एक सेकंड, मैं एक बार वो बाकी लोग भी सुनने में एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ किस तरह से हमने किया है। तो ये तो जनरल आ गया। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए आप बेंचमार्क्स बदलना चाहते हैं, तो आप कंपेयर में जा सकते हैं। सेटिंग्स में एक डिफॉल्ट बेंचमार्क आप सेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए मैं ये डिफॉल्ट बेंचमार्क ही दिखाऊंगा हमेशा। और वो आप कोई भी इक्विटी डेट या कस्टम चूज कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ग्लोबल बेंचमार्क जो आपने सेटिंग्स में सिलेक्ट किया है वो दिखता है बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन। जी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेंचमार्क सिर्फ हमें 500 TRI चाहिए होता है, ठीक है। हम्म। क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे पूरे पोर्टफोलियो तो 500 से ही कंपेयर कर पाते हैं। तो अगर मैं ओके। वहां पर डेट पे जाता हूँ, अभी मैं आपको अगर बोलेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा और हम्म। इस वेबिनार के बाद। जो हम्म। मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मेरे क्लाइंट्स का कुछ अगर रिटायरमेंट फंड में पैसा पड़ा है तो वो इक्विटी काउंट होता है। अच्छा, वैसा है क्या? हाँ, हाँ, तो आई रिटायरमेंट थिंक नहीं, रिटायरमेंट फंड में प्रॉब्लम आती है। रिटायरमेंट फंड के अंदर नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन पे जो स्टॉक्स जिन्होंने लिए हैं, अगर रिटायरमेंट फंड ने इक्विटी सिलेक्ट किया मतलब अपने होल्डिंग में रखे होंगे, तो वो इक्विटी हम कंसिडर करते हैं। वो बट पर्टिकुलर सर, फंड किस कैटेगरी का है उससे मैटर नहीं करता। सर वहां पर मैं आपको शेयर करूंगा, प्रॉब्लम ये आ जी, रही है। और ठीक ये है, ठीक पर्टिकुलर है, प्रॉब्लम्स आ रही है। जी जी, बस एक बिल्कुल डेटा बिल्कुल। प्रोटेक्शन एक्ट आप देख लीजिए और एक हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग वाला देख लीजिए। तो डेटा प्रोटेक्शन हमारा ऐसा है कि वेरी सिक्योर AWS के इकोसिस्टम में है। हमारा सर्वर और डेटाबेस सब इंडिया में ही है, तो जियोग्राफिकल प्रोटेक्शन है। SSL सिक्योरिटी, वो उस हिसाब से हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट है। पूरी दुनिया में जो बेस्ट सिक्योरिटी मेजर डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स हैं उस हिसाब से हमारा डेटाबेस है। और पूरा प्लेटफॉर्म उसी तरफ से डिजाइन है। सिक्योरिटी मेजर्स हैं जैसे लॉग आउट कर देना, ऑटो लॉग आउट आफ्टर सम टाइम का आप कर सकते हैं। क्लाइंट्स के लिए जो मेल सर्विसेज भी जाते हैं वो भी बहुत सिक्योर सर्वर से जाते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये जो नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, आपने माइट भी उसको रीड करा होगा, उसमें क्या उसमें कंसर्न्स लेने हैं अपने को, तो वो कंसर्न हम अपने लेवल पे लेंगे, आप अपने लेवल पे ले लोगे सॉफ्टवेयर के थ्रू? सॉरी, आप एक बार वापस बोल सकते हैं? सॉरी। सर जो नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है उसमें कुछ हाँ। कंसर्न्स की बात चल रही है और कंसर्न्स लेना कंपलसरी हो गया है। ठीक है, उसमें अच्छा। पेनल्टी 25 लाख रुपीज है मिनिमम, और मैक्सिमम ट्वेंटी ओके। फाइव करोड़ तो उसके कंसर्न्स जो है वो हम खुद बनाएंगे या आप लोग बना के उसमें डाल देंगे कि हाँ इसमें से अप्रूवल ले लो एक बार? एट दिस पॉइंट मुझे उतनी जानकारी नहीं है। मैं एक बार आपसे कनेक्ट करता हूँ, और मैं टीम से भी मैं एक बार ये इशू पे एक फोकस करने के लिए कहता हूँ। बट आई थिंक द टीम ऑलरेडी इस पे कुछ ना कुछ कर रही होगी। अभी मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक बार मैं आपसे कनेक्ट करके अच्छे से समझ लेता हूँ। ठीक है। थैंक यू। एक बार चैट में देख लेते हैं। अ, हाँ, तो एक बार कैन यू शो गोल बेस्ड कैलकुलेटर्स। हाँ, तो क्लाइंट्स आईडी देख लेते हैं वेरी इजीली। गोल कैलकुलेटर हमने, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अभी जो हमारे
गोल सेक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग के जो कैलकुलेटर्स हैं या वो बहुत इन डेप्थ हैं, इसमें सब फिक्स रिटर्न एजम्पशंस पे बेस्ड है। राइट, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आ गया। हाँ, तो गोल कैलकुलेटर अगेन, जैसे रिटायरमेंट गोल, कार गोल, तो अगर कार गोल देखें तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो होया कि एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। तो उस पे वेरी सिंपल टू यूज, टारगेट अमाउंट आपका क्या है, कब आपको अचीव करना है, इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे ईयरली कितने रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो करेगा, और इन्फ्लेशन किस हिसाब से है। तो उस हिसाब से आपको अगर एसआईपी करते हैं तो आपको इतना अमाउंट आएगा, अब मंथली एसआईपी इतने वैल्यू का आएगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ग्रो करेंगे, और ईयरली बेसिस पे पर्टिकुलर ईयर्स में आपका कितना इन्वेस्ट कर रहे होंगे उसका क्या रिटर्न आएगा। और गोल्ड वैल्यू में एक्चुअली आप वो फ्यूचर वैल्यू भी देख सकते हैं जो नॉमिनल वैल्यू है। सिमिलरली लमसम में वेरी सिमिलर अमाउंट कितना आज के दिन में लगेगा। गोल जो है 1 करोड़ का, वो गोल वैल्यू कितना चाहिए हमको, और हमें रिटर्न्स इतने करने के लिए कितने पीरियड के लिए कितना रिटर्न हमको लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से एनालिसिस आती है। मैं और भी देख लेता हूँ। In the portfolio analytics, risk and return scatter chart, there are two options: historical and estimate. What is the difference? So historical and estimates में मैं दिखा देता हूँ, एक बहुत सही सवाल है। रिस्क मेजर्स में हिस्टोरिकल ये है कि अब तक जो आपके स्कीम्स हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में है करंट स्कीम, वो मार्केट में कैसे उन्होंने अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है आपके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट। और एक्सपेक्टेड ये है कि बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, वो नेक्स्ट पीरियड्स में कैसा सिग्नेचर रखती है, कैसा वो परफॉर्म कर सकती है। सो हिस्टोरिकल इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द स्कीम नैव्स, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम ने ये रिस्क होगा और ये रिटर्न होगा, और उसको फिर हिसाब से प्लॉट करते हैं। स्टार रेटिंग शुड बी बेस्ड नॉट ऑन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न ऑल्सो। तो हम रेटिंग में शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म हम देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म में लास्ट क्वार्टर्स, 8 क्वार्टर्स का, 12 क्वार्टर्स का रिटर्न्स क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, फिर 1, 3, 5 ईयर सिंस इंसेप्शन उसने कैसा दिया। सो इट इज अ मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जैसे एक्सिस ब्लू चिप में दिखाया, वो बीच में थोड़ा उसका डाउन टर्न थे, तो उस टाइम पे रेटिंग कम हो गई थी, पर वापस अभी रेटिंग 4 स्टार हो गई है, बिकॉज लॉन्ग टर्म उसका बहुत कंसिस्टेंट था, स्ट्रॉन्ग था। रिस्क एनालिसिस विद डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन वन चार्ट, ये एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड, तो उस हिसाब से मैं फिर आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। निखिल, हाय निखिल, यू हैव एनी क्वेश्चंस? सर, हाय सर, एक बात बताओ सर, लेट्स से आई वांट टू कंपेयर माय पोर्टफोलियो विद गोल्ड एज एन एसेट, तो वो मैं कैसे जाके कर सकता हूँ गोल्ड इंडेक्स को लेके? गोल्ड, हाँ, अगर बेंचमार्क, एक्चुअली बेंचमार्क्स जो है, जो पब्लिकली अवेलेबल है, वही हम दिखा रहे हैं। तो इसमें आई थिंक गोल्ड का तो नहीं होगा, अभी के लिए इक्विटी डेट ही है। अच्छा, कस्टम पे भी नहीं मिलेगा? कस्टम एक्चुअली इन्हीं दोनों से ही बनता है। कस्टम जो आप बनाते हैं, अच्छा, तो इक्विटी इतना परसेंट, हाँ, डेट इतना परसेंट, इन स्कीम से ही बनता है। तो गोल्ड तो एज ऑफ नाउ नहीं। बिकॉज डीएसपी म्यूचुअल फंड इन हाउस उन्होंने अभी ये स्टार्ट किया है। उनका एक पोर्टफोलियो मेकर करके है, ओके। तो उनके वेबसाइट पे ही अवेलेबल है विद लिमिटेड बीटा एक्सेस। वहां पे वो फीचर लेके आ रहे हैं जिसमें वो एक्सेस दे रहे हैं गोल्ड के इंडेक्स के साथ कंपेयर करने का। बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनका काम ही होता है कि नहीं, मेरे को गोल्ड में ही करना है। अच्छा, तो अगर एक गोल्ड के साथ कंपैरिजन भी हो जाए तो दैट वुड मेक थिंग्स मच मोर इजी एज अ सेल्स पिच। understood, understood. And it's a very good insight. I'll just check whether those indices are publicly available. If they are, then we'll try to build data pipelines for that. परफेक्ट, नहीं इंडेक्स अवेलेबल है, बिकॉज इफ यू वांट आई हाँ, कैन शेयर द नेम ऑफ द इंडेक्स एज वेल। sure, sure. ठीक है, maybe वी कैन हैव अ through your पर्सनल। RM I'll connect with you, and we can हाँ, discuss this. चलेगा, ठीक, thanks. Hi, थैंक Mr. Shriram. Hi. Let's keep the question brief. I think we are running out of time. Sure. Sure.
say I have to give a benchmark return Mhm. compared to the, that's return minimum return I have to give. Now, how you can give that, my fund can beat it? Basically, two factors. The fund manager changes the sectoral allocation or stock picker. Okay. So can I get a report here that Mhm. speaks about the fund with respect to benchmark? What is change that has happened sectorial wise? बेंचमार्क के अंडरलाइंस की बात कर रहे हैं. Huh. See, that's how you beat That the index, right? benchmark का underlying actually how it's a good point. We actually had discussed a lot while building this. It is actually there's a lot of data pipelines उसके बहुत वैसे limited है. Currently not very readily available index के data. Normally हमको calculate करना पड़ जाता है. So जैसे अभी current ये जो portfolio analytics tool बना है, it is based on the data we get from a data vendor. इंडेक्सेस के अंदर का जो सेक्टोरल एलोकेशन है या जो भी म्यूचुअल फंड स्टॉक एलोकेशन वगैरह है, वेरी हार्ड टू गेट. सो आई थिंक इसलिए we didn't proceed with that. What I do is I take out from the MFI, 6 monthly index and then the mutual fund monthly portfolio. You have that, right? Yeah, वो And तो then हाँ, that you can. if you can give me how in the last 3 months sectoral allocation of say steel or consumer goods compared to index Nifty 50 or 100 and this fund. So I'll able to understand whether this guy fund manager is a stock picker or is able to read economy correctly, sectoral analysis. What is his fund attribute? That help me to decide whether should I go for this fund or no. Understood. I think that is a good idea. Let me touch base with the team and explore possibilities on this front. As of now, One. it's not there. So, Now, for me to download monthly portfolio in Excel sheet, which everybody gives, takes me 2 to 3 hours time. Can you give me this link somewhere, which is publicly available document, where I can download and your software can give me the same pattern? which sort of reports are you talking about? Monthly portfolio disclosure, everybody publishes, no? अच्छा 10 to नहीं 15%. हाँ understood. वो currently we are not thinking in that sense. I think there are public websites available, right? जहाँ पे आपको मिलेगा. Advisor Coach has. True, but they are but all different pattern, right? Columns are not there. So if you can give me that, that makes my job easier. Understood. Because see, the data But I which you think gave me नहीं, there, for us नहीं though that we can't do actually. कोई data redistribution clause. We I cannot don't directly think so. unless we do some analysis or morph the data. We can't really share that with you. So Think I about think it. Have, sir, understood. have a नहीं, I dialogue. get your point. It's a very good thing. But वही है, then I think data redistribution का ही clause applies. Just think And about it. Third sure. point is, Thanks. third point Uh, is in the loan in the calculator where you give, right? This becomes very big. If you can give me an hyperlink for the say car loan, if I'm talking about, if you can give me a hyperlink to the car loans of a SBI website or housing loan of any other bank which will give me, right? And I can put an exact interest rate. Also, if you give me an option of a prepayment, let's say I'm planning to pay every year 2 lakhs or 3 lakhs, what will be my mortgage table? And what's the percentage that I have paid? I mean, it makes much more practical there that if my client is going for a after 3 months or 2 months, next month, if he's going there, he can choose that. I mean, firstly, giving a hyperlink of any other website, for that, we need to strike partnership with them. It's a very long sort of a process. Publicly available, boss. Why? But then, we want to maintain our neutrality with Just suggestion, partners. because these number which I put it there, not very accurate. Even 0.2% for 50 lakhs loan makes huge difference. Sure. I think so we have tried to keep things more aligned towards our calculations in the goal section. Generalized discussion is there, okay. there might be some discrepancy between other providers because some of them, let's say very simple case,
from a yearly percentage, return percentage, when they convert to monthly, they do by 12, wherein we do it by reversing the compound interest formula. So those sort of discrepancies might be there. Correct. But when you Hmm. speak to the customer Mhm. and more accurate it is, has got more this one. See, if I say that, okay, your EMI is 35. In that sense, R would be more accurate, I'd say. Nahin, I mean, see, we can let's say, share the calculations. I can connect with you Yes. and maybe share the I'll Excel sheet that we have, wherein you can see the entire process. correct. If I tell you that you go to SBI, you will get 35,000 is your EMI. Mhm. It turned out to be 45. Then I would be at loss of words. This is not going to be useful to me. Correct? I mean, we can always, say that there is a caveat, actual things might differ from a certain percentage because everyone calculates. Because, In that with case, I would banks, not it's very take. interesting. Fine, Sorry, sir. just Think नहीं about banks में this. क्या होता है when in terms of investments it is calculated compound wise, and when it comes to loan it is calculated by dividing by 12. So everybody has certain bit of wiggle room in their calculations. Correct. My suggestion is that think of this, and if you can do something on it, it's going to be much more. See, Sure. right? We Think will of have. this. Keep an option open. Thank ठीक you, है. sir. I think we are right on time. For any further questions, please do reach out to your RMs. Also, we'll make the recording of this webinar available to you in a couple of days. Portfolio management, portfolio analytics also has video in our YouTube channel. Also, the detailed documentation, I'll make it available to your RMs. You can just ask your RM for that and they'll provide you with it. And I think that's mostly it for today's webinar. Please don't forget the next webinar that we have on Friday is for brokerage module. How it is structured, how it can be utilized, how it can help you, increase your business in a lot of ways. And the webinar after that is on branding and bulk reporting, which is again very good, useful tools. So please make sure to attend. We'll send you the registration links again. And see you next time. Also, please, if you like the add-on portfolio management, please do subscribe. It will help you a lot in your practice and gives you basically an edge over the others, wherein any sort of these very minute analysis insights can be very easily obtained. And yeah, it will help your business grow leaps and bounds, we hope. Sure. Hope you liked it. Thank you so much. Have a great day. Bye.